अस्सलाम वालेकुम। मुझे पहले ये बता दें कि मेरी आवाज़ आ रही है। माय नेम इज़ दुआ सैयद एंड आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। हेलो हेलो, वॉइस टेस्टिंग। प्लीज़ जस्ट कंफर्म मी इन द कमेंट सेक्शन दैट माय साउंड इज़ क्लियर, माय वीडियो इज़ क्लियर। तर 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 कीबोर्ड पे बस ना जल्दी जल्दी टाइपिंग शुरू कर देते हैं। क्या हाल है आप लोगों के? अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे जवाब भी दे दें। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और मैं फिर से रैंटिंग करूँगी आप लोगों को कि आप लोग की वज़ह से मैं सेशन जल्दी रख रही हूँ, तो आप लोग ही कमेंट कर रहे हैं कि इस टाइम कौन करता है? एंड देन सम पीपल आर नॉट अवेलेबल, तो मैं हर किसी का सोच के नहीं कर सकती हूँ। फिर मैं अब नेक्स्ट टाइम जब करूँगी तो मैं अपनी ही अवेलेबिलिटी के मुताबिक करूँगी। आज मैंने अपना 2 मीटिंग्स छोड़ के ये अरेंज किया, वो मैं अब शाम में 7 बजे करूँगी। तो आई हैव टू शेड्यूल माय थिंग्स एज़ वेल अलोंग विद यू। अगर आप लोग हर चीज़ में नाक मुँह चढ़ाएँगे ना, तो फिर वो ये होगा कि मैं फिर सब अपनी मर्ज़ी करूँगी। फिर मुझे ये नहीं होगा कि आप लोग की कम्फ़र्ट लेवल में नहीं देखूँगी। फिर ये कि रात को लोगों को नींद आ जाती है, दिन में आप लोग उठते नहीं हैं। तो मुझे बता दें कि ऐसा कौन-सा टाइम है? प्राइम टाइम तो मैं आपको दे नहीं सकती हूँ, जैसे लाइक 7 पीएम या 8 पीएम, क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है जब घर में फैमिली होती है, फैमिली का टाइम होता है एंड देन खाना-शाना बनाना होता है या एनीथिंग तो ये जो लाइव सेशंस होते हैं, ये थोड़े-से इसी टाइम पे हो सकते हैं जब मेरी एक्टिविटी या मेरे जो हाउस वर्क है या मेरा प्रोफ़ेशनल वर्क है, वो डिस्टर्ब ना हो। अगर वो डिस्टर्ब होगा तो मैं शायद ये लाइव सेशंस नहीं कर पाऊँगी। तो आई बिलीव इट्स बेटर टू हैव अ लाइव सेशन इंस्टेड ऑफ नॉट हैविंग इट, ठीक है? तो इसका मतलब यही है कि अगर मैं अपनी अवेलेबिलिटी आपको बताऊँ ये नहीं है, तो फिर आप मेरे लाइव सेशन से भी जाएँगे और जिन लोगों ने मुझे सुनना है वो भी नहीं होंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलें इट्स बेटर टू हैव इट इंस्टेड ऑफ नॉट हैविंग इट एट ऑल। जो लोग नहीं देख सकते कोई मसला नहीं है, बाद में पड़ा ही रहता है तो आप लोग दोबारा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन लाइव सेशन का मकसद ही ये होता है कि आप लोगों से बात करूँ, आप लोगों से गुफ्तगू करूँ, आप लोग के मसले सुनूँ और उसको सॉल्व करूँ। सो लेट मी जस्ट रीड योर कमेंट्स थोड़े से, क्योंकि जब मैं आप लोगों से बात कर रही होती हूँ तो मैं सिर्फ कैमरे में दिख रही होती हूँ और मुझे जो है वो एक साथ कमेंट्स पढ़ने की आदत है, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ तो वहाँ पे भी मैं एक साथ पढ़ती हूँ और फिर मैं उसके जवाब देती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ हफ़ीज़, आप कैसे हैं? शेख आप कैसे हैं? मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये यूट्यूब फैमिली के साथ इन्वॉल्व होने में। एक वर्चुअल फैमिली है बट आई फ़ील लाइक दैट्स अ रियल थिंग। ये कोरोना और ये थोड़ा-सा बैठ जाए ना, तो मैं आप लोगों के साथ असल वाला एक रियल फ़िज़िकल मीटअप सेशन रखूँगी। जिसने मिलना है, जिसने बात करनी है वो ज़रूर आए। मतलब मुझे बड़ा मज़ा आएगा जो लोग वर्चुअली इतना बात करते हैं, मुझसे हेल्प लेते हैं, वो मेरे साथ इन पर्सन भी मुझे मिलें। तो विल डू समथिंग आफ्टर दिस कोविड थोड़ा-सा बैठ जाए। और उसके बाद हम पढ़ते हैं, सहर कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी, बिल्कुल, मैं अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक रखूँगी, क्योंकि आई कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी एंड आई कैन नॉट फॉलो योर टाइम शेड्यूल, राइट? तो मुझे अपनी अवेलेबिलिटी सबसे पहले देखनी है, लेकिन अगर मैं उसको भी आगे पीछे कर रही हूँ और फिर भी यू गाइज़ आर नॉट हैप्पी, देन इट्स बेटर टू जस्ट फॉलो माय ओन शेड्यूल एंड नॉट डू एनी चेंजेस इन माय स्केड्यूल। इकरा, आज का लाइव सेशन वैसे तो मैंने 1 एंड अ हाफ आवर का रखा हुआ है, लेकिन डिपेंड करता है। वालेकुम अस्सलाम, आशिक खान, अब्दुल सत्तार, वेक्टर पोर्ट्रेट वीडियो बना ली? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं बनाई। निहाल रहमान, कराची वाले जल्दी नहीं सोते। मुझे लगता है ये जो रात को आती है ना अवामी कराची वाली होती है, ये इस्लामाबाद वाली नहीं होती, लेकिन मैं पिंडी से बिलॉन्ग करती हूँ, मतलब इस्लामाबाद और पिंडी एक ही चीज़ है, लेकिन मैं तो जाग रही होती हूँ। जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, मेरा हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो गया है आप लोग की वज़ह से कि मैं रात को नहीं सो पा रही हूँ। मैं सुबह सोती हूँ 7 बजे, 6-7 बजे सोती हूँ, फिर दिन में
2 पीएम पे मेरी क्लास होती है, तो मैं उठती हूँ आई गेस 12 बजे अक्सर। तो ना वो मेरी रूटीन बिल्कुल अपसाइड डाउन हुई हुई है। तो कुछ ख़्याल करें और सेशन अटेंड करें मेरे। एक और चीज़, मैंने कल जो वीडियो डाली है पॉल रैंड की, उसमें ना काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी। पहले तो मैं वो कन्फ्यूजन क्लियर करती हूँ। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ फर्स्ट। पहले तो ये बताएं कि आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो देखी ही नहीं है, मतलब उस पे व्यूअरशिप अभी आई ही नहीं है। तो ऐसा ना करें, देखें उसको, क्योंकि उसके अंदर मैंने टास्क दिया हुआ है। वो टास्क आपको तभी आपको पढ़ने से समझ नहीं आएगा। वो टास्क आपको तभी समझ आएगा जब आप उस टास्क को उस वीडियो को देखेंगे। ठीक है? तो वो सिर्फ एक टाइम लैप्स नहीं है। उस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया है, ये वाली वीडियो है। ठीक है? इस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया है कि आप लोगों ने करना क्या है, राइट? तो अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपने करना क्या है और आप बस ये नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे, तो फिर आपको मुझे तो यही लग रहा है कि सब लोग आए हैं, उन लोगों ने डिस्क्रिप्शन पढ़ी है और काम मुझे सबमिट करवा दिया है। काफ़ी सारे लोगों ने जो काम सबमिट करवाया है वो अकॉर्डिंग टू माय असाइनमेंट है ही नहीं ना। आपने इसका मतलब सिर्फ ये पढ़ लिया, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया है और एक नाम पढ़ लिया है और बस शुरू कर दिया है। आप एटलीस्ट देखो, वीडियो तो देखें ना कि उसमें किस तरीके से मैंने, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ इट्स अ परफेक्ट डिज़ाइन, बट मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि उसमें कितना ज़्यादा प्ले अराउंड किया है। आपने ये भी देखा होगा कि मैंने पूरा बनाने के बाद उसको रिजेक्ट भी कर दिया। ये भी देखा होगा कि वो उसमें मैंने आर्ट वो पैटर्न्स बनाए हैं, वो मैंने डाले, फिर मैंने निकाल दिए। यू नो द प्रोसेस, इसमें प्रोसेस दिखाया हुआ है। और फिर कुछ लोगों ने लिखा हुआ है स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो स्पीड डिज़ाइन है ना, स्पीड तो ज़्यादा ही होगी। अब मैं आपको अगर इसकी ओरिजिनल स्पीड दिखाऊँ तो ये 4-5 आवर्स का काम है। 4-5 आवर्स के बाद जब मैंने डिज़ाइन पोस्ट किया, वो इतना सिंपल है, वो देख के ऐसा लगा है कि 5 मिनट में बन गया होगा। लेकिन जब इस वीडियो को आप देखें तो फिर आपको समझ आएगा कि नहीं, आई वाज स्ट्रगलिंग हार्ड विद द फॉन्ट्स, विद द कंपोजिशंस एंड विद द स्पेसिंग अ लॉट। मुझे कुछ चीज अच्छी नहीं लग रही थी। जब मैं उसको यहाँ पे आप देखें, अगर मैं इसको प्ले कर रही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे वीडियोस पे ऐड भी आने लग गए हैं। अच्छा, तो लेट मी जस्ट प्ले दिस। ये देखें, मैं इसको अब मैं सोच रही हूँ, या मैं रुक गई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को जो है, सॉरी, इस डिज़ाइन को जो है मैं किस तरीके से इसमें शेप्स का इस्तेमाल करूँ, मैं ब्लैक रखूँ या मैं पूरा कलरफुल रखूँ। फिर मुझे डायरेक्शन देनी है उसकी बर्थ डेट, बर्थ ईयर पे, तो वो मैंने फिर शेप और ट्रायंगल के साथ किया। फिर मुझे ब्लू ज़्यादा लग रहा है, फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, वो मैं बिल्कुल ही निकाल देती हूँ। मैंने दूसरा फिर डिज़ाइन, उसी डिज़ाइन को कॉपी किया, उस डिज़ाइन में इतनी चेंजेस नहीं की। मैंने कहा चलो मैं इसको ना स्टेयरकेसेस बना के इस तरह करती हूँ। फिर भी मुझे लग रहा है कि टू मच हैपनिंग, मतलब यार 1914 पे क्यों इतना फोकस जा रहा है, मैंने सिर्फ उसके नाम पे फोकस करना है। वाज लाइक स्ट्रगलिंग हार्ड। फिर मैंने उर्दू में सालगिरह मुबारक लिख दे कि चलो ठीक है, थोड़ा देसी टच आ जाएगा। एंड आई वाज सेटिस्फाइड विद द आउटपुट, बट अगेन आई स्ट्रगल्ड हार्ड एंड आई डिड अनदर डिजाइन। मैंने कहा अब मैं इंटायरली सिंपल सिर्फ नाम के साथ करूंगी, एक शेप और एक फॉन्ट और एक नाम। ठीक है? तो फिर उसमें मैंने कलर्स जो है वो आपने देखे, सिर्फ कलर्स के मैंने वेरिएशंस बनाए। तो यू you नो ये चीज सोच के करनी पड़ती है। अब आप लोग कुछ डिजाइन में चाहे वो ठीक है, आई नो कि आप लोगों ने बहुत जल्दी, किसी ने 11 बजे भेजा है, तो अगर उसने सुबह 10 बजे वीडियो देखी है तो फौरन बनाया, आई अप्रिशिएट दैट। लेट मी जस्ट टेक आउट दैट नेम, किसका था सबसे पहले? वेट, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि अच्छा ठीक है, एटलीस्ट काशान ने किया है। काशान ने मुझे सबसे पहले जो है ना ईमेल किया है। काशान ने किया है, हारिस खान, कमाल हसन, कैप्टन स्टार गोल्ड, प्लीज अपना सही वाला नाम लिखा करें। मोहम्मद साकिब, संद्रेश शाह, हफीजुर रहमान, जैन आबिदीन, लव ह्यूमैनिटी, प्लीज नाम सही लिखें। अंबर सानी, आमना अमजद, खानजादा, काजी अम्मार, नवीद जमीली, अर्श अर्श आई डोंट नो ये नाम पूरा है। तो यू नो चीज देखेंगे तो फिर आप लोग समझ आएगी कि आपने करना क्या है। यू हैव टू स्ट्रगल। अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे कॉम्पोजिशंस के साथ कि नहीं नहीं नहीं,
ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप लोगों को मैं एक आपस की बात बताऊं, जब मैंने बना भी लिया, मैंने पोस्ट भी कर दिया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट डिजाइन। आप लोग कह लेक्चर आर्टिस्ट कभी सेटिस्फाई नहीं होता, लेकिन आई एम ट्रूली नॉट सेटिस्फाइड। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि आप लोग मुझे मेरी तारीफ करें तो फिर मैं आपको कहूंगी कि हाँ नहीं, मैं इस तरह बोल रही हूँ, लेकिन आई एम एक्चुअली नॉट सेटिस्फाइड विद इट। बट जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो सेटिस्फेक्शन ये है कि मैंने कुछ सोचा और वो मैंने किया, और फिर मैंने उसको वीडियो की फॉर्म में बनाया। ठीक है, लेट मी जस्ट गेट आउट फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई एम कमिंग बैक इन 2 minutes. Sorry, my mother was calling me. Okay, तो duties. She's saying अभी कौन सा टाइम है सेशन लेने का, और घर कितने काम पड़े हुए हैं। मैंने कहा नहीं, आज मैं ले रही हूँ। ओके, let me just read your comments. Where I can send you which I make logo, please guide me and sort out a mistake, tell me. फॉर्मेशन टीएन, जो भी आपका नाम है, प्लीज अपना नाम तो पहले पूरा सही से लिखें, जो आपका ओरिजिनल नाम है। हमने फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ है, दुआ डिजाइन खाना लर्न ग्राफिक डिजाइन विद डिजाइन खाना दुआ सैयद। वो फेसबुक ग्रुप मैं आपको दिखा देती हूँ, वो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें। आई एम रियली एक्टिव इन दैट ग्रुप। इवन अगर कुछ लोग विटनेस हैं यहाँ पे, तो उनको मैं सुबह 6 बजे भी वेलकम कर रही थी। कोई ऐसा होस्ट नहीं होगा जो आपको इतनी ज्यादा आपको मैं आप लोग को मुझे लगता है मैं आप लोग को ना बिगाड़ रही हूँ। तो वो ग्रुप ज्वाइन करें, उस ग्रुप में मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं अभी शेयर कर लेती हूँ ग्रुप का लिंक और पेज। ये हमारा ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लें। इसमें हर किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती। अब आप देखें कि यहाँ पे जिसने अपने आर्ट वर्क पोस्ट किए हैं, मैं यहीं पे ही एक्सेप्ट करती हूँ। आप लोगों ने कोई अपने बिहान्स के लिंक या अपने इलिस्ट्रेटर के एरर्स कुछ भी आप पोस्ट करें, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करती हूँ, एक्सेप्ट कि कोई इररिलेवेंट पोस्ट हो या फिर कोई ऐसी पोस्ट हो जो कि आप लोग मतलब एक दूसरे को बैश कर रहे हो। तो ये ग्रुप इंटायरली फ्री फ्रॉम बैशिंग नेगेटिविटी है। यहाँ पे आपके काम को प्रमोट भी किया जाएगा और आप लोगों को एक एक्सपोजर भी मिलेगा। इसके अलावा इस ग्रुप में अगर कोई ऐसे मेंबर्स की रिक्वेस्ट आती है जिन्होंने आंसर नहीं किया होता है क्वेश्चंस को, पेज को फॉलो नहीं किया होता, यूट्यूब को फॉलो नहीं किया होता, इंस्टाग्राम को नहीं किया होता, आई एम सॉरी, मैं उनको भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट दे फॉलो और लाइक माई पेज, इट्स अबाउट कि मैं अपने यूट्यूब पे कोई असाइनमेंट देती हूँ या मैं अपने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चनिंग करती हूँ, अगर वो लोग मुझसे कनेक्टेड ही नहीं है उन पेजेस पे, तो मैं उनके मतलब मैं उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती हूँ, राइट। तो फिर वो ग्रुप पे आके कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था ये कब हुआ और ये कैसे हुआ, आपने हमें बताया नहीं। तो वो बताया होता है अपने पेजेस पे, लेकिन ग्रुप तो उसमें तो मैं आपके साथ डायरेक्टली आपके काम पे बात करती हूँ ना। तो फिर वो ये होता है कि आई डोंट हैव टाइम फॉर देम कि मैं उनको सेपरेटली एक लिंक दूं या सेपरेटली मैं बताऊं। तो जो लोग यूट्यूब को फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम और मेरे पेज को कर रहे हैं, वही इस ग्रुप में आते हैं। और जो लोग नहीं कर रहे, मैं उनको लाइक वी आई हैव अ टीम जो मॉनिटर कर रही होती है, फिर मैं उनको इस तरह से निकाल देती हूँ। मैंने काफी सारे लोगों को निकाल दिया इस ग्रुप में से, जो कि इस तरह से टाइम वेस्ट करने के लिए आए हैं। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी, प्लीज वो देख लें, जो मैंने अभी आप लोग के लिए स्पीड डिजाइन पोस्ट किया है। उसको देखने के बाद आपको टास्क समझ आ जाएगा। टास्क की डेडलाइन आज रात 11:55 की है, 11:55 PM की है। उसके बाद मुझे एंट्रीज आएंगी, ठीक है, वो पोस्ट बेशक कर दे, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं करेंगी जिसमें से मैं सेलेक्ट करूंगी। तो मैं 3 डिजाइन सेलेक्ट करूंगी, उन 3 डिजाइन को मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी और अपने फेसबुक पे पोस्ट करूंगी, और अपने लाइव सेशन में उसको वो भी करूंगी, जिन्होंने बनाया है उनका नाम भी लूंगी। और हो सकता है कि उस डिजाइन को पोस्ट करने के बाद आपको कुछ लोग मेरी रेफरेंस से अप्रोच कर लें।
Which fonts are using in latest Insta post? Latest which one? ये लाइव पोर्टफोलियो वाली या फिर पॉल रेंट वाली? लाइव पोर्टफोलियो वाले में मैं सिगोई यूज कर रही हूँ और इन वो पॉल रेंट वाले में मैं गिलरोय यूज कर रही हूँ सेंस सेरिफ। आई एम अ फैन ऑफ सेंस सेरिफ बट पता नहीं मेरे डिजाइन खाना के लोगों का जो फॉन्ट है वो सेरिफ क्यों है। थैंक यू नबील। यस आई ट्राई टू रिप्लाई एवरीवन एवरीवन एवरीवन, मैं किसी का नहीं छोड़ती हूँ। एक और चीज मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, वो एक और चीज क्लियर ये है कि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ये कहते हैं ना कि एक्सक्यूज मी बात सुने, आई एम नॉट रिप्लाइंग टू देम। हाय डियर क्या हाल है, आई एम नॉट रिप्लाइंग टू देम। दुआ आई नीड योर हेल्प, आई एम नॉट रिप्लाइंग टू देम। ठीक है, इस तरह की जो एम्बिग्विटी आप क्रिएट करते हैं या ऐसे वेग क्वेश्चंस हैं, मैं इनका रिप्लाई नहीं करती हूँ। आप डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन थ्रो करें, आई एम स्टक इन इलस्ट्रेटर एट दिस पॉइंट, व्हाट टू डू, आई विल टेल यू। I have made these artworks, what to do, I will tell you. I have to do graphic design, where to start, I will tell you. But आप इस तरह से ये क्वेश्चनिंग इस तरह से स्टार्ट करेंगे तो आई विल नॉट रिप्लाई बिकॉज इट्स अ वेग स्टार्ट। होता ही है कि जब मैंने शुरू में लोगों को रिप्लाई करना शुरू किया इस तरह के क्वेश्चंस पे तो उन लोगों ने मुझे कहा कि नहीं बस डियर आपसे बात करने का दिल चाह रहा था। ऑनेस्टली आई डोंट हैव टाइम कि मैं आप लोग के साथ गप्पे लगाऊं फालतू की। काम से रिलेटेड तो मैं आपको बिल्कुल अपना पूरा पूरा टाइम देती हूँ, लेकिन ये वाले जो होते हैं ना लोग जो सिर्फ आपसे हालचाल पूछने के लिए आ जाते हैं, तो मेरे मेरे हालचाल पूछने के लिए बहुत सारे लोग हैं। वो मत पूछें, आप अपने काम की बात करें, आप मुझसे बस काम की बात करें, आप मुझे ना थैंक यू बोले ना सलाम करें, बस आप कहें ये चीज है बताएं। ठीक है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, टू द पॉइंट रहे, टू द पॉइंट। और अगर टू द पॉइंट नहीं रहते तो फिर वो ये होता है कि आपका मैसेज जो है आई एम सॉरी मैं उसको रिप्लाई नहीं करूंगी। पैकेजिंग और लेबल डिजाइन अभी थोड़ा बाद में है क्योंकि अभी हम लोग मैं आपको चाह रही हूँ कि अभी आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो। पैकेज एंड लेबल डिजाइन इज नॉट समथिंग विच इज वेरी इजी। तो आप लोग जो है जब पैकेज और लेबल डिजाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितना ज्यादा जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग सब कुछ कर रहे हैं वो उसी में इन्वॉल्व हो रहा है। तो डायरेक्टली वी आर नॉट जंपिंग ऑन दैट, करेंगे जरूर लेकिन अभी नहीं करेंगे। आई एम टेलिंग यू अभी से। बिजनेस कार्ड कोई मुश्किल नहीं है डिजाइन करना जब टूल आता है तो बिजनेस कार्ड बनाने में क्या मसला है। जो डिजाइन सेंस है वो आपका बेसिकली इट मैटर्स। अच्छा, चले जी मैं जरा स्टार्ट करती हूँ स्क्रीन शेयर। सलाह अशरफ है सबसे पहले। स्क्रीन नजर आ रही है? यप। इनोसेंट एंजल, पहले आप अपना नाम चेंज करें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं आप लोग को बार बार आपके नाम चेंज करने के लिए कहती हूँ, लेकिन मुझे आपकी रियल रियल नेम या रियल आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। जैसे तला अशरफ है, ये फेसबुक पे तला अशरफ बहुत मतलब इन है हर चीज में। तो मुझे इनकी आइडेंटिटी पता है। मुझे मैं इनसे मिली नहीं हूँ ना, मैं इनसे कभी पर्सनली बात की है, लेकिन आई नो ये ग्रुप में भी इन रहते हैं, ये यूट्यूब पे भी इन रहते हैं और उनका पोर्टफोलियो मेरे पास है तो मेरा इनसे कनेक्शन बन गया है। तो अपना नाम रियल रखा करें प्लीज। कोई क्लास नहीं होगी, लेकिन आप लोगो डिजाइन का कोई जो भी आपने क्वेश्चन पूछना आप पूछ सकते हैं। चले, अच्छा थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कमेंटिंग बंद करें और इधर देख लें। यहाँ पे हम खोलते हैं इनका कोई एक डिजाइन। अच्छा, इनके डिजाइन में ना बड़ी डाइवर्सिटी है, कुछ बहुत ही ज्यादा दे आर वेरी बैड बट सम दे आर वेरी गुड। इसको स्टार्ट करते हैं। पोस्ट डिजाइन है ये। जब मैं किसी के काम पे कमेंट कर रही हूँ तो प्लीज बाकी लोग भी इस चीज को नोट करें, ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही गलती की हुई होगी, आपके काम में भी उतनी ही गलती हुई भी होगी।
शेफ ग्राफिक डिजाइन की कोई टेक्निक नहीं है। ग्राफिक डिजाइन आप समझें कि क्या है और फिर उस पे उस पे रिसर्च करें और उसकी ब्रांचेस देखें। देयर इज नो शॉर्टकट्स एंड देयर आर नो टेक्निक्स फॉर ग्राफिक डिजाइन। ये क्वेश्चन ही आपका जो है वो गलत है। अच्छा, इन्होंने हाई वर्ल्ड्स का लोगो बनाया है, उसके बाद टाइटल डाला है, और उसके बाद ये उन्होंने आई डोंट नो, ये भी लोगो लग रहा है, ये भी लोगो लग रहा है, और फिर स्ट्रिंग सेट गॉर्जेस, और फिर नीचे आई गेस नंबर, वो स्ट्रिंग्स के जो वो नंबर दिए हुए हैं। तो ये एज अ डिजाइन अच्छा है, इट्स अ गुड डिजाइन, बट इसमें फोकसिंग पॉइंट्स तीन तीन फोकसिंग पॉइंट्स हैं। वन, टू, थ्री। ठीक है, तो ये तीन फोकसिंग पॉइंट है, तो लोगो पे बिल्कुल नजर नहीं जा रही है। लोगो बिल्कुल ही ज्यादा आउट हो गया है। दूसरा, ये जो वी इन्होंने बनाया है गिटार टू लेके, तो ये जो लोगो डिजाइन होता है वो सिंपल होना चाहिए। तो इतनी ज्यादा डिटेल्स है, ऊपर ऊपर से ये जो वायर भी जा रही है, तो मैंने जूम इन करके देखी है, इसकी जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिंपल, अगर आप ये डॉट्स और ये वायर निकाल दें तब भी ये चल जाएगा। इसका बता दें मुझे तलहा, अगर आप हैं, तो ये क्या है? ये आपने अ, उसके साथ आर लिखा हुआ है, रियल, तो फिर रियल, फिर इसका मतलब तो ये ब्रांड है ना, ये ब्रांड तो नहीं है। तो बट द लुक एंड फील ऑफ दिस पोस्ट इज रियली नाइस। आई रियली लाइक द ग्रीनिश टोन्स विद द ब्राउनिश टोन्स एंड ब्लैक्स। ये जो रेड है, इसके नीचे पहले जो लाइन आपने डाली हुई है, आपने टेक्स्ट को कभी भी अंडरलाइन नहीं करना होता डिजाइन में। लाइन आप एज अ एलिमेंट यूज करते हैं, बट यू डोंट अंडरलाइन। यहाँ पे आपने लाइन को एज अ एलिमेंट यूज किया हुआ है, लेकिन आपने यहाँ पे अंडरलाइन यूज किया हुआ है, तो ये नहीं करना। फिर जब आप सारा कुछ लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ रख रहे हैं, तो ये बीच में क्यों आ गया? इसको भी फिर यहाँ रखते हैं। फिर इसके अंदर आप इस फॉन्ट को जो है वो छोटा करके इसकी स्पेसेस ज्यादा करें, क्योंकि जब एक फॉन्ट छोटे साइज का होता है, जब एक फॉन्ट छोटे साइज का होता है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उसमें स्पेसेस ज्यादा रखते हैं, उसको कहते हैं कर्निंग। नहीं सर, यावर नहीं आएंगे आज। आज हमारे पास एक और स्पेशल गेस्ट है, वो आएंगे, और मैं उनको भी इनवाइट करती हूँ। लेट्स इनवाइट फर्स्ट, और फिर उनसे उनका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। हेलो, Hey, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? welcome Sam. How are you? I'm good. Mahmood, can you please give your introduction first to the audience? Yeah, excuse the shaky camera. I'm just resting my laptop on my lap. So It's just okay. bear with me. I'm just gonna It's adjust okay. everything. We have a very casual audience. They don't mind. Yeah, so I don't know how much Dua told you about me, but I'm her husband from across the pond. If you can't tell from my accent, I'm based in United Kingdom. I have 7 years of design experience working for agencies, working freelance, and just doing bits and bobs here and there. And I did study advertising and brand management, which is basically design communication from Staffordshire University. And I graduated, it's been quite a while now, 5 years ago. It's okay. So, Yeah, yeah, it's that's just a quick intro. And I'm here to okay. review some portfolios. Yeah. सो जिन लोगों को अभी ऑब्वियसली हर किसी को नहीं समझ आई है, तो फिर मैं ये उनकी बात रिपीट कर देती हूँ कि इनका ग्राफिक डिजाइन में जो एक्सपीरियंस है वो 7-8 इयर्स का है, और ये यूके बेस्ड डिजाइनर है वर्किंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो इनका जो काम है वो होगा थोड़ा सा अंग्रेज टाइप, ठीक है, और ही कैन नॉट अंडरस्टैंड उर्दू, तो इसलिए मुझे आधी उर्दू और आधी इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, या मुझे बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तो बेयर विद मी। एंड ही इज ऑल्सो माई हस्बैंड एंड डिजाइनर कपल। तो हम लोग जो है वो मिलके आप लोग के साथ ये सेशन कर रहे हैं, और टाइम डिफरेंस बहुत है पाकिस्तान का और यूके का। सो ये थैंक यू कहें सर मामूर को कि ही टुक आउट टाइम फॉर अस, No, that's और fine. No, 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 that's fine. No need एंड to be इट्स so देयर ऑफ, formal. एंड इट्स देयर ऑफ। तो वहाँ पे जो लोग हैं, जो वेस्ट के लोग हैं, वो सैटरडे संडे को बिल्कुल भी कोई काम नहीं करते, दे जस्ट डू रिलैक्सिंग एंड पार्टी एंड एवरीथिंग, बट ही टुक आउट टाइम फॉर यू गाइस, टाइम फॉर मी। So yeah, thank you and welcome Mamu to my YouTube family. It's a and pleasure. It's a pleasure. and No worries. No need to he's the thank. person who supports me a lot in this YouTube journey, and with you guys obviously, but he's the first one who pushed me towards doing this kind of a thing. So
you know, we have men out there who supports women, and I'm lucky that I have Mamour in my life. So let's start. मैंने एक अभी design review किया है. Mamour, I have reviewed one design, but we'll start with another one with you. Sure. And let me know. कमेंट्स में अगर किसी को कोई बात समझ ना आए तो वो कमेंट्स में मुझसे दोबारा पूछ सकता है, तो मैं आपकी उनकी बात रिपीट कर दूंगी. लेकिन अगर आपको समझ आ रही है उनकी बात, उन्होंने लाइक सोचा हुआ है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बात करूंगा, तो फिर भी आप मुझे बता सकते हैं. Somebody is asking, is your husband? Yes, he's my husband. That's why I have a big smile, because we are living in a long distance relationship Yes. and we are just connected through this virtual world. Yeah, some people are asking why I can't speak Urdu. My background is actually Bangladesh. So my family is from Bangladesh, and I can understand a little bit, but don't expect me to speak Urdu. I am trying to learn for my wife one day. So yeah, Inshallah. yeah. Okay, someone is saying, can we see Mamour's work for inspiration? I will link his portfolio after this session. Not now, because we are focusing on other people's work. So let me just share my screen. And I'm not good in English, so just pardon me in that, Yeah, Mamour. your English is fine. Don't downplay Okay. yourself. Now that you are here with me, so Yeah, I think the session will go for like hours and hours and hours hours. and hours. Yeah. I don't have to worry about that. My husband is waiting. Okay, so let's start from Tala Ashraf. I have already reviewed this design, but I want you to review any of his work. He's actually his sense is pretty much good, but let's just look into some more of his work. Sure. I think you are better at judging UX and UI, so not this one. तलहा, जब आप कोई काम डाला करें ना वेबसाइट का, तो उसको स्पेशली मॉकअप्स पे भी डाला करें. इस तरह से ना समझ नहीं आता. मॉकअप और फ्लैट डिजाइन होना जरूरी है. I mean, the Okay. website was fine. You can go onto it. I can quickly review it. There's not much into it. I want some designs which we can talk about it. So we can talk about in this one. So start. Over to you. Yeah, so the main thing here is my eyes, like they don't really know where to go. And obviously, you're trying to sell something or you're trying to promote a product. So you have to think when designing something where, like, how you can get that across as quickly as possible. So how can you tell your viewers, your audience that, hey, this is $300. This is what we do. We do guitars. And straight away, like when I quickly look at this, my first thing I see is make your own or the classic guitar. I don't see the 299. It doesn't pop out to me. That's not the focal point, but it should be, because that's the main thing that the post is trying to do, sell the guitar. And if I'm being honest, it's not really speaking to me. And I would make that more prominent. And just use of colors. It could be, there could be more contrast to make the guitar stand out more. Right now, it's sort of just merging with the background and it's just all blurred. There's no clear design language here. So he has also uploaded a second variation of the, not variation, second design of the same content. Have a look at this. This I've already reviewed. Yeah, this one's a lot better. It's cleaner, it's easier to follow. There's structure, it's all left aligned, which is a positive. My eyes know where to follow through to the design, but the content seems to be different. He's not using the sell $300. Yeah. So Yeah. मामूर ये कह रहे हैं कि मैं इसको देख के खरीदूंगा नहीं गिटार कभी भी. Like I'll not purchase the guitar. I'm not focused towards the price.
तो जो प्राइस होती है ना वो फोकल पॉइंट आपका बनना चाहिए, क्योंकि प्राइस से ही कोई ना कोई चीज अट्रैक्ट होती है अगर आपने उसको एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देना है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपका जो डिजाइन में कंट्रास्ट है ना वो नहीं है, व्हाइट और लाइट ब्लू का कोई कंट्रास्ट नहीं बन रहा, ये एक बड़े म्यूटेड कलर्स हैं। तो स्टैंड आउट करने के लिए आपको एक कंट्रास्टिंग कलर यूज करें, या आप गिटार का जो इमेज है उसको बिग कर दें, या उस इमेज को बड़ा करके आप सिर्फ उसका हाफ पार्ट दिखा दें। आप लोगों ने देखा होगा जब मैं आप लोगों को डिजाइन दिखा भी रही होती हूँ, या आप लोगों ने स्पीड डिजाइन में देखा होगा, तो मैं सबसे पहले बड़े बड़े लेटर्स या बड़ा करके देखती हूँ उसको, फिर मैं उसको छोटा करती हूँ। जब तक आप उसको अपनी बाउंड्री से निकालेंगे नहीं ना, तब तक आपको उसमें वो फील नहीं आएगी जो आप लाना चाह रहे हैं। आप एक्सपेरिमेंटल उस पे जाएं, डोंट प्ले सेफ। तो इसमें काफी सेफ प्ले हुआ हुआ है जो ये वाला डिजाइन है। Could इट्स mention the drop shadow as well. ये ड्रॉप शेडो Don't आप do that. मेंशन करें मामूर। मामूर प्लीज मेंशन द ड्रॉप शेडो योरसेल्फ। व्हाट डू यू Yes, मीन the बाय drop दैट? shadows around the around the circle, that's generally bad practice. You don't want to do that. It just makes the design look very unprofessional, and it doesn't, there's a lack of polish, and also the shadows seem to be in different directions as well. They're not pointing in one direction. So if you must use the shadows, at least have the orientation in, make them all equal. So obviously the blue, the light blue circle seems to be pointing downwards. The other And it's ones too much left. going on. Too much So going yeah, on, there's as too in much like going order on. now here to $299 here, and then scriptive font here with like less of the kerning, and then there's a smiley here. So it doesn't look professional. It looks funky, but at the same time unprofessional. So nobody will buy it. The main point is we have to buy the Yeah. stuff. We have to buy the guitar. But I will not personally, I will not buy it since I'm not attracted towards the advertisement. और ये जो लोगो है ना नीचे गिटार शॉप लिखा हुआ है, आई रियली लाइक दिस लोगो। अगर ये आपने खुद बनाया है, अगर ये आपने कहीं से लिया है तो फिर आप देख लें कि इसकी फील इट्स रियली नाइस। बट आई पर्सनली थिंक ये आपने नहीं बनाया, बट हो सकता है आप नहीं बनाया हो, तो आप बता दीजिएगा। थैंक यू तलहा अशरफ, यू आर वेरी एक्टिव एंड वेरी, आपका जो डिजाइन है क्या नाम है पॉल रैंड का, वो भी आपने ही भेजा है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिव्यू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच। लेट्स जस्ट जंप टू अनदर portfolio. Let me just take a question. Task का बता दें, Paul Rand लिखना है, sans serif में लिखना है। Formation, whoever you are, if you search Paul Rand's artwork या Paul Rand's work, he just go and research that what sort of fonts he used, sans serif, scriptive, whatever. I'm not telling you. That's not my job. My job was to show you the way, but your job is to just walk on the way. Don't ask me. Just make a research. मुझसे मत पूछें, एक रिसर्च खुद करें और खुद देखें कि वो सेरिफ यूज करता था या sans सेरिफ यूज करता था। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं खतीजा आरिफ है ये जी, खतीजा आरिफ का हम लोग करते हैं। आई होप खतीजा आरिफ हमारे साथ हो, नहीं है तो बाद में देख के कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सो दिस इज खतीजा आरिफ, इन्होंने पीडीएफ जमा करवाया था, तो ये उन्होंने पोर्टफोलियो आई थिंक उसमें बनाया हुआ है। आई थिंक शी हैज क्रिएटेड दिस पोर्टफोलियो इन पावरपॉइंट, so this is, but her creativity lacks. I feel like while looking at portfolio, if we talk about this, apart from this, every design is just like, it doesn't look like it's being inspired or it's have been taken any, design inspiration from internet. This is already being done, or I guess on free pick I have seen a lot of time. So Mamour, can you just review this particular design for me and for Khatija and other Yeah, people? I would like to echo those statements. Not this design particularly, but in general, it just seemed a lot of the designs were template based, and it's, as you said, I've seen it somewhere before in free pick. So again, you could probably expand a bit later on how to draw inspiration from other designs and make it your own. Because sometimes it's easy to play safe, but you need to think outside the box to make a design, bespoke and really stand out. So looking at this is this a website design? No, this is just an uh, a post for advertising and admissions in school. It's just a post Okay. like this. Let me just zoom out. Yeah, just zoom out a little bit. Yeah, she has given the website. It's a PDF, so I just have to look.
Yeah, it looks a bit like a website, you know, these. Because of the column grid in the formation. Yeah, with this, things just seem a bit too blocky. Yep. It's not really flowing, and things just seem a bit too large. There's a lot of things going on, like the font sizes are not really consistent. Mamur, when you talk about flowy, what does that mean? What does the I flow means? So iFlow, I mean, I can't really give I don't know too much the technical terms, but it's like when you look at the design, there needs to be a clear hierarchy, so a focal point. And here, obviously, the one thing that gets to me is 2020 admissions open. That's okay, but then after that, my eyes are a bit lost. I don't know where to go. Do I go to contact us? Do I go to creating a community life learners? And then group learning, first of all, like I noticed some mistakes. The boxes are purple, which merges with the background. That could have been a gray or an off-white or something that to just make it stand out a bit more, because the way the design is done, she went with some sort of, playful overlay. ओके सो आसान ज़बान में तो सब लोग सुन रहे हैं आसान ज़बान में कि डिज़ाइन ना काफ़ी फ्लैट है, ठीक है? इट डज़न्ट हैव एनी लेयर्स, इसकी कोई लेयर्स नहीं है, कोई फोकल पॉइंट नहीं बन रहा कि हम पहले कहाँ से शुरू करें और कहाँ देखें। जब हम इसको देख रहे हैं तो हम कॉन्टैक्ट अस पे भी देख रहे हैं, हम लोग एडमिशंस पे भी देख रहे हैं, क्योंकि 2020 और नाउ ओपन जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। कलर बैकग्राउंड में इतना लाइट दिया हुआ है कि व्हाइट कलर पे तो वो नज़र ही नहीं आ रहा। फिर क्रिएटिंग अ कम्युनिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, ये कोटेशन है, कोटेशन बीच में हैंग हो रही है, ठीक है? इसका कोई ऊपर से भी ताल्लुक नहीं है, उसका कोई नीचे से भी ताल्लुक नहीं है। फिर ग्रुप लर्निंग, आउटडोर प्ले और क्रिटिकल थिंकिंग, तो आउटडोर प्ले में उनको उसको येलो करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर ये तो वेबसाइट नहीं है ना, यू आर नॉट होवरिंग ऑन इट। अगर आप होवर करते हैं तो कलर चेंज होता है, बात बनती है, लेकिन एक स्टैटिक डिजाइन है तो उसमें वो येलो करने की बात बनती नहीं है। एंड द बॉटम पे वो जो उन्होंने लोकेशन और वो जो एक वो बनाया हुआ है ना डिजाइन, मतलब पॉइंटेड बनाया हुआ है, तो सबसे पहले ऑनेस्टली मेरी सबसे पहले नजर उस पॉइंटेड चीज पे जा रही है, इस चीज पे जा रही है। वेट, लेट मी जस्ट जूम इन। इस चीज पे जा रही है, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि बस मैं इसको देखूं और वेबसाइट पे जाऊं, और वेबसाइट भी येलो कलर पे इतनी लाइट है कि वो आई एम अनेबल टू रीड इट, ठीक है? रीडेबल, ये एक इंफॉर्मेशन है, ये एक फंक्शनल डिजाइन है, ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं है। फंक्शनल डिजाइन में आपकी रीडेबिलिटी, लेजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ इट्स योर डिजाइन इट्स नॉट रीडेबल, लेजिबल, देन it's not conveying the message, and nobody will take admission in this school, whatever Yeah, you are. just one few further points I'd like to add is, first of all, I don't know if you've noticed this, Thor, but I can tell that image has been stretched out. It's Yeah. not been, yeah, yeah, it did not fit I its aspect noticed that. ratio. So that's one thing that No. sometimes, sometimes you find an image that you really like. However, it's too narrow or it's too wide. In which case, just make the image larger. Never stretch it and change the aspect ratio. So don't make a square image rectangle or a rectangle image square. Just make it, if it's a certain shape, just make that shape larger so it fits in with the design. Don't stretch or tilt or just change the ratio, because then, like for example, with this design, you could tell the face is just too wide and too Yeah, short. It looks very out of unnatural. proportion. Yeah. Yeah. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फॉन्ट तो स्ट्रेच करना ही नहीं करना ना, लेकिन फॉन्ट के साथ साथ इमेज भी स्ट्रेच नहीं करनी, स्क्वीज और स्ट्रेच नहीं करनी। ये डिजाइन का एक बेसिक रूल है कि आपने कोई भी चीज को प्रोपोर्शन से आउट नहीं करना अनलेस इट्स फंक्शनल। अगर आप उसको एब्स्ट्रैक्ट या एक्सप्रेशनिज्म में लेकर जाने तो उसके साथ आपकी कोई लॉजिक अटैच होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इन दैट केस आप एक इमेज तो बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं कर सकते। आप एक इमेज तो बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं कर सकते। और इस बच्चे का जो मुंह है वो इतना वाइड हो गया है कि वो इतना वियर्ड लग रहा है इस पिक्चर के अंदर। तो जो जिनका भी ये काम है खतीजा, तो हमेशा शिफ्ट दबा के इमेज को स्केल अप स्केल डाउन क्या करें। अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं रेक्टेंगुलर में फिर कैसे लेकर आऊं, तो यूज स्मार्ट वे नॉट हार्ड वे। तो स्मार्ट वे ये होता है कि फिर आप इस तरह की इमेज सेलेक्ट करें इंटरनेट से कि आपको वो इस फॉर्मेट पे मिल जाए और आप उसको क्लिप करके रेक्टेंगुलर बेस में
लगा सके, प्लीज स्ट्रेच नहीं कीजिए इमेज को। आप एक फॉन्ट स्ट्रेच करते हैं तो एक टाइपोग्राफर की मौत होती है, एक इमेज स्ट्रेच करते हैं तो एक डिजाइनर की मौत होती है। डिजाइनर डाइज व्हेन अ फॉन्ट इज स्ट्रेच, राइट मामून? So we Right. don't want to we don't want to die. So don't stretch the fonts, don't stretch the image. और इसमें भी इन्होंने ये स्ट्रेच की हुई इमेज और ये इसमें विजिबल नहीं है बिल्कुल भी। वाइट अगर रखा हुआ है तो ये आपने वेबिनार why it's muted, you don't have to do it. And then if you're designing a business card or anything, you don't write speaker name designation, just write the dummy text, write the name, and write the actual designation. It looks really, अगर आप ये किसी को पोर्टफोलियो भेजेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि आपने सिर्फ उसको भेजने के लिए टेम्पलेट उठा के उस पे बना दिया। It shouldn't seem like it's a template. Honestly, out of every your work, this is the most powerful design, as in because the image is not stretched and image is really powerful, but you have just आपने जो है वो डिजाइन के साथ बड़ा ज्यादती कर दिए, जो ग्रेज यूज कर लिए हैं। अगर आप यहाँ ग्रेज ना यूज करती हैं, और कोई कलर्स यूज करती तो बड़ा पावरफुल इमेज बन जाता। ठीक है खतीजा, थैंक यू। Let's just take a couple of questions. Someone is saying beautiful couple helping people. Wow. Thank you so much. Mashallah, mashallah. Somebody is saying, yeah, that's a sin to design, stretch a design or font or image. It is a sin. It should be. जो लोग कह रहे हैं कि वो काम कहाँ अपलोड करें, कहाँ दिखाएं, ऑब्वियसली आप लोग डायरेक्ट मामूर का अप्रोच नहीं कर सकते, आपको मुझे ही दिखाना पड़ेगा। तो आप वो ग्रुप पे पोस्ट कर दें। Mamu, I will add Mamu to that group, and if he sees the group, he is not a Facebook user, but if he sees the design, he can help you out in that. They want your review now. They just like, go away, Dua, go away. We want Mamu's advice. Mamu is our new teacher. Yeah. I can take over easily. MZM designer, I'm waiting for your blending tutorial. I will sure make tutorials on tools of Illustrator. अभी तक मैंने टूल्स इसलिए ज्यादा नहीं फोकस किए क्योंकि ये वाले ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। तो मुझे होता है कि जो चीज अभी नहीं पड़ी हुई ना, पहले मैं आपको वो दे दूं और उसके बाद मैं अपने तरीके से आपको दिखाऊं कि मैं टूल्स को किस तरह यूज करती हूँ। ऑनेस्टली ब्लेंडिंग टूल anyone can use it, and there are like thousands of tutorials for that, but obviously I'll make it, but my first priority to build your base, to make your base, and it should be stronger. They want to hear Urdu from you. Yeah. So can you say something in Urdu? I don't know. I know. Just say uh, design should not be Pendu in Urdu. I don't know. I can say my name is Okay, Mera say it. Naam Mamur. And And I can say, like, if I can say Kesi ho, Tiko, I can say that stuff, but I can't say much more than that. I can understand a little bit because Dua's been making me watch Hindi films with her. So slowly, I'm picking up more and more in Urdu, but for now it's very limited. it's At okay. least, yeah. Plus my accent is horrible, so excuse that as well. Dua always Okay. laughs whenever I speak Urdu. Yeah, because you look cute in that. Someone is saying your next topic lecture. My next topic for lecture is 19 rules of typography. अब वो जो 19 rules होते हैं वो functional typography के लिए चलते हैं, तो bear that in mind, ठीक है? तो उन rules को जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद जो मैं आपको assignment दूंगी वो उन rules को break करने की दूंगी, तो be mindful in that. Okay, so someone is asking, Mamur, you can better answer in that. Can you give some tips for creative aptitude preparation? Creative aptitude preparation. So he means just generally preparing for designs. Well, first of all, you have to. Well, me as a designer, what I do is, for my job, I have multiple projects on the go. So I have to prioritize my tasks based on importance. And one thing I do is I look at what needs to be done and I quickly
formulate how much time I'm going to spend on each project. So, for example, obviously a website task is gonna take more time than just making a logo, or something like a big series of marketing adverts will take more than just making a poster. So those tasks I prioritize, and then creative aptitude. Yeah, and then I'd go about my day starting with the project that's going to take the most time, and also based on the deadlines as well. So if something's going to be हुँ, rushed, and I'm going हुँ, to and I need to finish it in 2 hours, then obviously in those situations I would do an icon task or a logo task, simply because it's going to be handed very soon. So there's a lot of variables I need to take into considerations, but that's the first thing I do. So once I've got my task list in order and I know what I'm going to be working on, once I get into the task, I quickly do some research. I look at similar designs. I look for inspiration, and just get my creative brain working. And because sometimes you know your brain is blank and you don't know where to go, and you're like, oh god, where do I start with this design? And that's and okay. you're It happens scattered, and your mind is scattered. Oh, let's just start this, or you don't end up starting anything at all. Exactly, and that's normal. It happens to every designer. Whether you're an intern or a creative art director at a big design agency, it doesn't matter. Everyone happens to everyone. So Okay. in Okay, that let's in that sense, hmm. yeah. So in these In situations, you need to just Google, just whatever it is, just Google, Pinterest, look at other designers' works, look at competitors. That's usually a good one. Look at competitor. competitors. यस, And कंपैटिबल मतलब अगर आप लोग अपने जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका ऑलरेडी उस कैटेगरी का किसी ने डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप वो चेक करें, जाके देखें। यही मैं आपको कहती हूँ, पहले दूसरों का काम देखें, यही सबसे पहले प्रिपरेशन है। और फिर अपनी टाइम शेड्यूल बना लें कि आपने अभी इस तरीके से 1, 2, 3 करके स्टार्ट करना है। लोगो बनाना है, अगर आप लोगो में इतने अच्छे नहीं हैं, आपको लगता है लोगो में ज़्यादा टाइम आप लेंगे, तो आप बैनर स्टार्ट कर दें, अगर आपके पास लाइन अप हुए हुए हैं। लेकिन अपने माइंड में रखें कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। ये नहीं करना कि आप बस पहले सब कुछ एक साथ शुरू कर दें और हम एक साथ खत्म करेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है? ओके, लेट्स जस्ट स्क्रीन शेयर फॉर साइमा हमीद। साइमा जी, साइमा किधर हैं आप? अगर आप मुझे देख रही हैं तो प्लीज़ रिप्लाई करें। दिस इज़ साइमा एंड आई वांट टू रिव्यू दिस लोगो फॉर हर। Doa? हुँ, Yeah, I think you misunderstood the person's question. Question I was actually asking, creative aptitude test of ComSats Islamabad. So it was directed at you. I don't know if you know about that. I didn't read that. I just read what I showed you on the screen. Yeah, that's what I thought as He wrote, well. he wrote tips for creative aptitude preparation, but he didn't wrote for CIAT concepts. Hmm. Now he's saying creative aptitude test for CIIT at home. Okay, so okay, this is from me. Before going to Saima's work, I will just tell you about my thing. Honestly, I was not a graphic designer at that time when मैं ग्राफिक डिजाइनर नहीं थी जब मैंने स्टार्ट किया था कॉमसेट्स में काम। मुझे सिर्फ ड्राइंग्स का पता था, स्टिल लाइफ का पता था। तो मैंने अपनी 2 रातों में बैठ के अपना पोर्टफोलियो बनाया था, और जो मुझे वहाँ पे जाके ये कहना था कि ये मैंने 2 रातों में नहीं बनाया, ये मैं विद टाइम बनाती रहती हूँ, ठीक है? तो उसमें यही था कि मैंने सिर्फ ड्राइंग्स की थी, सिर्फ ड्राइंग्स का पता था, इलस्ट्रेशंस क्या होती हैं ये पता था, इलस्ट्रेशन मतलब मैनुअल पेंटिंग्स क्या होती हैं, स्टिल लाइफ क्या होती है ये पता था, उन्होंने मुझसे पूछा था। तो उसमें और कोई एज़ एज़ सच हमारा कोई वो नहीं हुआ था कि हमारा टेस्ट
हुआ था, लेकिन हमसे कोई इस तरह के क्वेश्चंस नहीं हुए थे टेक्निकल, बिकॉज़ दे नो कि हम लोग किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो दे टुक अ टेस्ट फॉर लाइव ड्राइंग, दे पुट सम शेप्स, उन्होंने हमारे सामने कोई शेप्स रखी थी, कहा था उसको बनाएँ, इसको ड्रॉ करें। उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में हमसे ये पूछा था कि आप क्यों आना चाहते हैं? आपको क्या लगता है हम क्या सिखाएँगे? और आप कोई 3 ऐसी चीज़ें बता दें जो कि पेंटिंग या क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड है। और बस यू हैव टू शो योर बॉडी लैंग्वेज कि आप करना चाहते हैं। और आउट ऑफ 200 पीपल आई वाज़ द वन हू वाज़ सिलेक्टेड इन 24 स्टूडेंट्स। तो यही प्रिपरेशन होती है, इसमें कोई आपको कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास हैंड ग्रिप होना चाहिए आपकी पेंसिल पे। Okay, so let's just go to Saima's work. She made this video for advertising. This was the video. Okay, can you repeat that? Wait. Replay that quickly. If you want to review that video or the logo, because we can just use the Send study me a view. link to this, if you can. No, I can't. Not here. Oh God, she uploaded a PNG now. जी, हम लोग वो वीडियो दोबारा प्ले कर लेते हैं। I think this is another video. It is. I'm just concerned with her logo. I like the video. ये थी वो पहली वाली. This was the first one. Okay, I like the video, but I don't like the shiny thing and the logo. The You images mean are the sparkles? lad. Yeah, I'm pausing it. Wait. Yeah, the red and black is not working, is it? Yeah, it's not working. So, Saima, if you're listening to us, please listen to carefully. Mamour, over to you. Start. Yeah, so the red and black, it's not working because obviously that's that's the logo, and you need that to be clear. And right now, with at least the shade of red and the black, there's not enough contrast. And in all honesty, I wouldn't use black with the red. I'd probably use white, and it would have worked slightly better. And if anything, with the previous video, you used black with the white, and that worked even better. So it's just adjusting the colors and making sure the logo is visible, and it's just small change, and that's what it's a small change, but it makes a big impact. So choosing the right colors, like in this case, the logo is not visible. So no matter how good your video is, you're trying to tell them to go to this place and eat, but if they don't know who they are, they can't see the logo, then what's the point of editing an amazing video? So that's all. So if we talk about colors, you also have an artwork with black and white and the colors. Now talk about colors on this specific artwork he created. Is this one concept? Yeah, this is one concept, and it's being shown as a variants: yellow, red, green, white. Yeah, so in general, I wouldn't use red and green together personally, because it's very hard to make work, and also the background you used, it's this sort of cardboard brown color. There's not enough contrast. It's not really sticking out. The others are fine. However, the brown, red, and green, that's 3 colors. And that's a big no-no in graphic design. When it comes to logo design, especially,
try to stick with one color. And if you really need to use two colors, that's okay, but use the second color as an accent color. So just use a portion of the logo, like how you did with the red part of the Sorry, S. I'm cutting you, but one color doesn't mean you have to include black and white. Black and white, they are the neutrals. You have to use that one as well if it's needed. क्योंकि Yeah, आप लोग क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो आप ऑब्वियसली ब्लैक या व्हाइट बैकग्राउंड पे तो दिखाएंगे, तो आपने ब्लैक के ऊपर व्हाइट या व्हाइट के ऊपर ब्लैक रखना है, ये तो आपने रखना ही है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि एक कलर, और अगर बहुत ही जरूरत है तो दो कलर, वरना अगर आप तीन कलर्स पे जाते हैं तो ब्लैक व्हाइट, टू कलर्स ये हो गए, तीन कलर्स 1 2 3 4 5 कलर्स हो गए एक तरह से ये। तो ब्लैक एंड व्हाइट के साथ एक कलर यूज कर लें, ब्लैक एंड व्हाइट के साथ दो कलर अगर बहुत जरूरत है। आप लोगों ने मुझे भी देखा है, आई डोंट रियली यूज टू मच कलर्स, बट व्हेन इट्स नीडेड आई यूज इट एंड आई हैव अ लॉजिक फॉर इट। इफ देयर इज नो नीड ऑफ इट देन जस्ट डोंट यूज इट, आप ना यूज yeah. करें। So black and white are colors for logos that you need to create, because for every logo there is a white and black version, and there's usually a color version as well. और So दूसरा yeah, इस लोगों के डिजाइन में द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक थिंग इज इनकी स्पेसिंग। अब जब ये वाला लोगो आप रिडक्शन करेंगे, स्केल डाउन करेंगे, इट विल नॉट बी विजिबल, ये विजिबल नहीं होगा। तो आपने इस तरह से रिड्यूस करके लोगों का साइज भी देखना होता है कि वेदर इट्स विजिबल, इट्स स्पेसेस की जो बीच की स्पेसेस हैं ये विजिबल है, ये स्केलेबिलिटी है इस लोगो के अंदर, तब वो लोगो सक्सेसफुल होता है। अदरवाइज इन इट्स दिस लोगो इज अनसक्सेसफुल। जो प्रीवियस लोगो हमने देखा है वो अनसक्सेसफुल पूरा नहीं है, लेकिन उसके कलर्स का मसला है, वरना ये बेहतर हो सकता है अगर हम इसके स्ट्रोक को फिल करते हैं। ठीक है। yeah. Did you also talk about the use of type? I ये know the main focal point was color. So again, बट इट्स नॉट गोइंग विद द फॉन्ट। yeah, here the typeface is very weak, and it doesn't go with the design. या या Yeah, that's all. And again, you talked about scalability, and if you were to make that small, it will not be visible. I think this is a What's successful this? as compared to that. It is successful the way you have shown it. Okay, you have shown too many colors. Don't show too many colors to the client. बहुत सारे colors client को मत दिखाएं। वो क्या करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, इन पे कहेगा मुझे इनमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप उसको दो ऑप्शंस दिखाएं कलर्स के, एक ब्लैक एंड व्हाइट पे तो दिखाएं और एक दो और ऑप्शंस दिखा दें। बट दिस इज फार मोर बेटर, स्पेसेस थोड़ी सी बेहतर हो जाए, दिस इज फार मोर बेटर। Rest you have really generic designs, Saima. आपका अंदर potential है, I can see the potential. So try to take out that potential and try to design fearless. Try to experiment more on your design. I know you can do it because of your design sense. Thank you, Saima. Saima के बाद हमारे पास है, somebody is saying, Dua, you are a great superstar. I am a superstar, and today our superstar is Mr. Mamoor. You're my superstar. I'm not a superstar. Public. Okay, we are starting from, I don't know, Abd Graphics, AG Graphics. So we'll talk about his design. No, what is this? Instagram post? Let's talk about Instagram post. No, it's being shown like that. Please do not show mockup first. Show your design and then put it on mockup. Otherwise, it's not at all visible on the screen. I cannot comment on the mockup designs. I don't know what is this. It's Instagram post. K typography. AG graphics, आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि you didn't give the title properly. What's it about? It's just a social media post, I know, but what it's about, you need to give in the title. So, Mamoor, over to you. Weapons of mass destruction. I guess he's trying to talk about social media and his control on society, but yeah, it's not really clear what's going on. In all honesty, I don't really have much to say about this other than the concept needs to be stronger. It's I don't know.
the proportions don't seem right. Like weapons of mass destruction is way too big, and the logo is right in the top corner. I would have probably centralized this since it's a central design. And again, successcl.com, which is the website and what you want people to click on or at least go search up. It's not clear. It's black on blue. I probably would have And had it in I'm white. noticing those strips. Those strips are actually problematic. If your text is visible on the lighter background, if you can use darker color on lighter background, what's the point of using those white strips? There's no point of using that. It just makes, yeah, it just squeezes the design and doesn't give it any breathing space. And the Uh, fact that, and you know why it's problematic? जिनका भी नाम है AJ Graphics, AG Graphics. It's problematic just because okay, section 1, 2, 3, 4, 5. So you made 5 sections in your design, which is not at all needed. And then the eye, it's not going here. It's just focusing here and then directly here, not even going to your icons which you have made with all of your heart. So you need to flow the eye from left to right or right to left, and you make the flow with the font. आप font के साथ flow बनाते हैं eye का. तो अगर आप इसका ब्लॉक 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 में बना देंगे तो मैं सिर्फ या तो सिर्फ इधर देखूंगी और बस मैं इसको बंद कर दूंगी, या मैं इधर देखूंगी मैं बंद कर दूंगी. क्रिटिकली ऑब्जर्व करें, डिजाइन को क्रिटिकली देखें कि आपकी पहले नजर किस पे जा रही है और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं. तो आप जब कॉन्शियसली सोचेंगे ना, तो मैं जब कॉन्शियसली सोच रही हूँ, मेरी नजर सिर्फ मैथ डिस्ट्रैक्शन पे गई है, इस पे गई है और बस मैं बाहर निकल गई हूँ. मैंने ऊपर जब मामूर ने मेंशन किया देयर इज अ लोगो एट द टॉप लेफ्ट राइट, honestly I noticed that logo after that, so I didn't even notice that. It's like irrelevant to my brain. and maybe that's a topic you could discuss in one of your videos Yeah, about, how to structure a design and using yeah, negative I will. space. Yeah. Yeah, composition and layouts, they are, it should be there. It should be there. So let's talk about Daniel's work. Let me just take a couple of questions since it's a live session where we can share our portfolio. Oh my God, I have told this like 1 lakh times. Share your portfolio on my email, dua@designkhana.com, and post it on Learn Graphic Design with Designkhana, Dua Sayed. The group is called Learn Graphic Design by with Designkhana Dua Sayed. Let me just share the screen and you can see. गाइस ये देख लें, यहाँ पे मैं टास्क देती हूँ, टास्क 3, टास्क 2. यहाँ पे मैं सारी इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ, लोग अपना काम शेयर करते हैं. Look at this, people are sharing their work and I'm commenting on their work. दिस वर्क इज डन आफ्टर जो मैंने वीडियो बनाई थी. फिर उसके बाद मुझे 7,000 का सब्सक्राइबर्स मिले, मैंने यहाँ शेयर किया आप लोग के साथ. सबसे पहले एक ग्राफिक डिजाइन की बुक है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. This group is really good for the people who wanted to take the review, because यहाँ पे मैं खुद बहुत एक्टिव हूँ और मैं डिजाइन करती हूँ. मामूर, the best thing about this group is that there are people from India and there are people from Bangladesh in this group. So on 14th of August, people were posting Happy Independence Day Pakistan, and on the 15th, people were posting Happy Independence Day India. So it's a very positive and a very showing a unity between neighboring countries with people, and everyone is uh, active on showing their creativity. If I ask some question, तो जहाँ पे जो लोग इस ग्रुप में ऐड है, जब मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ, कोई बात करती हूँ, कहीं मैं जा रही हूँ तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ. तो देयर एक्चुअली 163 comments on this particular post. जो मैंने इनसे पूछा था कि what is the mistake in Biryani Hub's logo. So a lot of people said a lot of things which is correct. So please join this group and answer the question before joining it. If you don't answer the question, I will decline the request at first. Okay, so on this particular post, my mother also commented, logo is not too good. So my mother is also a creative person, and she knows about these things, design and everything, since she is with me from since my when my journey has been started. मेरी journey जब से start हुई, मेरी अम्मी मेरे साथ है. तो मेरी अम्मी का जो comment है, समझे वो मेरा ही comment है, क्योंकि we used to talk about your designs together. हम लोग एक दूसरे से discuss करते हैं जब यहाँ पे designs आ रहे होते हैं. So me and my mother are discussing your designs. So it means if she's saying something, it has a weight. ठीक है.
तो ये सब लोग ज्वाइन कर लें ग्रुप। आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट। ये मैं इसलिए आप लोग को एक फ्लो दे रही हूँ क्योंकि आप लोग को आपको एक्सपोजर मिलना चाहिए। ये मोदी किंग है जिनका भी नाम कुरुनल मोदी नाम है इनका। तो इनका कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा था। बस मैंने इनसे कहा था स्ट्रोक हटा दें, रिमूव द स्ट्रोक फ्रॉम योर आइकन, अदरवाइज इट्स द लोगो इज गुड। हसीब कासिम की पोस्ट पे किसी ने कमेंट किया था कि इट्स कॉपीड, तो प्लीज किसी की पोस्ट पे कॉपीड और ये वाली अगर उसने किया भी है ना तो ये नेगेटिव वे में मत लिखें। आप ये लिख सकते हैं कि आपका हमने डिजाइन कहीं ना कहीं देखा है, वी हैव सीन योर डिजाइन समवेयर एल्स, ट्राई टू डू समथिंग यूनिक। ठीक है, दिस इज अ वे ऑफ डूइंग पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। इफ यू विल से ओ योर वर्क इज कॉपीड, अगर अगली दफा आप कुछ पोस्ट करेंगे और उस बंदे को वो कहीं नजर आ गया ना तो वो भी आपको फिर बैश करेगा। दिस प्लेस इज नॉट फॉर बैशिंग। ठीक है, you have to do positive criticism. I wrote it down that me, I have seen this design, I have seen this badge a lot on free pick, but free pick is a free website, you can use that icon anywhere else, but don't try to use generic design. generic designs बनाएंगे तब वो अपील नहीं करेगा, तब वो मेमोरी में नहीं रहेगा। एक यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे दूं, जब आपका डिजाइन किसी की मेमोरी में रह जाए, आपका डिजाइन सक्सेसफुल है, इफ द डिजाइन इज नॉट यूनिक, तो वो किसी की मेमोरी में नहीं रहेगा। आपका या तो डिजाइन बहुत बुरा होना चाहिए, आइदर योर डिजाइन इज शुड बी टू मच बैड, आइदर योर डिजाइन इट शुड बी लाइक टू मच गुड। द एवरेज डिजाइन होते हैं ना वो कभी याद नहीं रहते, या तो बहुत बुरा डिजाइन बनाए या बहुत अच्छा डिजाइन बनाए। इफ यू हैव नोटिस दैट आई कॉमेंट on most of the designs I comment which are bad, which are very bad, and they're in my memory, and I comment like 4 to 5 in the row. मैं रुकती भी नहीं हूँ, मैं कमेंट करती रहती हूँ, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, मैं बार बार देखती रहती हूँ और बार बार कमेंट करती रहती हूँ। आई थिंक 5 to 6 टाइम अगर मैं किसी की पोस्ट पे कमेंट करूँ, या तो उसका डिजाइन बहुत बुरा है या उसका डिजाइन बहुत अच्छा है, कि मैं उसके डिजाइन को परफेक्ट बनाना चाह रही हूँ या मैं उसके डिजाइन को बुरे से कुछ बेहतर बनाना चाह रही हूँ। लेकिन जो एवरेज डिजाइन होते हैं ना, मैं उस पर लिखती हूँ कि दिस इज गुड, दिस इज फाइन, दिस इज ओके। you know, those designs did never stay in my memory. Now I have some designs in my mind जो कि मैंने यहाँ देखे हैं और मेरी मेमोरी में रह गए हैं। तो वो डिजाइन जो है, जैसे ये फॉर एग्जांपल दिस वन कटाकट, yeah. So I really like this minimalist approach, and it's really good. The presentation is really good, and the guy who he drawn by hand and then used Illustrator for that. So you know, these kind of things. It's the group is full of creative person. You can see a lot of stuff from here. This is a really powerful design, and a design like this is average. I will not, मुझे इसमें कोई इस तरह की बात नजर ही नहीं आ रही जो मेरे जहन में रह जाए। तो ये शायद मैंने अगर देखा भी हो तो मेरे जहन में नहीं है ये डिजाइन। ठीक है, ये डिजाइन मेरे जहन में है क्योंकि एक तो ये मैंने आपको टास्क भी दिया था, दूसरा एक है इनकी कॉम्पोजिशंस बहुत मजे की थी। ठीक है, दिस इज अ पावरफुल डिजाइन, लेकिन आई डोंट नो ये इन्होंने किस में बनाया, फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में। इन खातून को मैंने बोला था कि आप वाइट बैकग्राउंड रखें, लेकिन उन्होंने फिर भी येलो ही रख दिया, तो इट्स अप टू हर। मैंने कलर थ्योरी में येलो रेड को यूज करने से मना किया, लेकिन यू गाइस स्टिल डिड दैट। So group, join this group for your portfolio. I'm repeating it thousands of times. Sorry if I'm talking more in English, but I'm also translating in Urdu. इस ग्रुप को ज्वाइन करें, इसी में ही पोस्ट करें। I look like I'm a radio jockey जो रेडियो में बोल रही थी और बस फिर थोड़ी देर बाद ना अपने लाइव कॉल्स देना शुरू कर देती है। ठीक है, so let's start our next. There's a few questions here. I'll take the question after this one, Daniel's work, because I like some of his work. Let's What's this talk. 5-star stuff? Yeah, I think it's a logo. Yeah, it's a logo. It's a logo for a construction work. Yeah. Let me read out if he has. 5-star marketing is dedicated to providing our clients with result-oriented advertising, public relations, and total marketing support. We are committed to providing products and services that benefit to our clients. अच्छा, ये तो एक marketing company है. Mamu, it's a marketing company. I don't see any marketing essence in this. I feel like this is any construction company who builds and. No, I think what I think he's trying to do is he's trying to have a play with, you know, construction and building networks. He's trying to use that as a metaphor.
because as you build something, you're building a network. I guess that's what he was trying to go for. But what did he say on the description? Just scroll down quickly. Okay. I do generally like the compositions and the use of color. 2 colors. It's simple. It's clean. It's flows well, and I like the use of negative space as well. But yeah, like how you said, you don't quite understand the concept, but I do see what it's trying to convey with the use of building a network and tying that in with construction, building blocks. I do get that. Just needs to be a bit more clear, in my opinion, but that's just an opinion. In terms of design, I don't think it's that bad. It's quite good. Maybe the stars could be a bit better. The idea is good, like execution is not that great, Yeah. but idea is good. इन्होंने जो 5 star के साथ 5 star भी डाले हुए हैं, but like this version is good, and as compared to this version, जिसमें I can see there are bits and mistakes in the drawing, but so see, this is flat. This is entirely flat. You have created a shades. Okay, I agree to it, but here, if you're using 2 colors, I think it's creating a distance because of the intersection. If you're creating an intersection, अगर आप intersection create कर रहे हैं, तो अगर आपका one color है, तो वो पे उसका part लगता है. यहाँ पे भी I feel like there are 2 parts of the logo, and it's not for me. In my opinion, it's not appealing for me ऊपर, above, but it's going here. और अगर यहाँ पे use of spaces थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, तो it will be better if you scale it down. So look at this. It's not at all relating with the yellow hat, with the construction hat and the gray part, but here it is. So that's my point in this design. But it's obviously the colors are good. It's presented well. So Yeah, it's a it's good. presented well. It just needs a bit of polishing, but overall it's not too bad. Just needs a bit of work. This is a social media post or a poster design, you can say. This has a lot of thing going on. Over to you, Mahmood. Yeah, again, I'm just like you said, there's a lot of things going on. I'm trying to just follow the design. My eyes going from left to right, left to right, left to right. I don't like how it's split diagonally in 2 designs. However, executive English language classes, I don't like how it's flowing over. It just doesn't look professional. And also, descriptive font, it's not. What is that? Join and feel the difference. So that's the tagline. I don't understand why it's scriptive. Like it just breaks the design. Like it does not go at all. You can't even read it. I have to really squint and just to make out what it says. And yeah, like it needs to be more. It needs to flow better. There needs to be some sort of structure. Remove the elements. Remove the element. You are using an image. You are using the icons. You are using the scriptive font. You are using the left alignment. You are using the right Yeah, alignment. what You are I would using have done, everything I in would one. have like personally, you could use the image in the diagonal, but then have the blue plane. Just have But it yeah, and if you're using a diagonal, then you shouldn't be like corner to using corner. other half. Yeah, corner to corner. You shouldn't be using other half. आपको दूसरा half यूज करने की जरूरत नहीं है. आप एक में ही काम चला सकते हैं. इसको आप फ्लैट भी रख सकते हैं. Scriptive, it's not at all going. ये कोई salon या कोई feminine सा design नहीं है. It's a very corporate design, and you should use corporate fonts. These kind of fonts, these are not using corporate sectors or in some professional और सीरियस पोस्टर्स जिसमें आपके कोई इस तरह की कोई बात ना हो जो स्क्रिप्टिव और जो फेमिनिन फॉन्ट्स हैं या क्लासिक फॉन्ट्स हैं या लग्जरी फॉन्ट्स हैं उसको डेवलप कर रही हो. तो आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. इफ यू हैव नोटिस्ड, आई यूज फॉन्ट्स एक अपनी पोस्ट में और उसकी मैं फैमिली यूज करती हूँ, लाइक बोल्ड, ब्लैक, लाइट, रेगुलर. तो वो एक ही फॉन्ट में यूज करती हूँ. आई डोंट यूज लाइक
lot of fonts in my post and it looks better. Less is more, less is more, less is more. ठीक है? Thank you, Daniel. Questions ले लेते हैं, Mamur. Let's just take questions. I have one question. Like I learned the design Photoshop and Illustrator. I'm having the problem that where should I start practically? Like, should I choose one category like post design and move on? Mamur, if you want to answer that question. You take this one. ओके सो आप कह रहे हैं कि आपने फोटोशॉप इलस्ट्रेटर स्टार्ट कर लिया और आपको प्रैक्टिकली क्या स्टार्ट करें, एक चीज चूज करें पोस्ट डिजाइन के लिए। अगर आपको फोटोशॉप इलस्ट्रेटर आता है ना तो आपको उसमें से कोई एक चीज कभी स्टार्ट नहीं करते, ठीक है? ये आपकी चॉइस है कि आप पोस्ट डिजाइन के अंदर फोटोशॉप इलस्ट्रेटर दोनों का यूज रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पोस्ट डिजाइन के अंदर टाइपोग्राफी भी है और इमेज मैनिपुलेशन भी है, तो आप इमेज मैनिपुलेशन को फोटोशॉप में करते हैं और फिर उसके बाद उसको फोटोशॉप में एक्सपोर्ट कर लें या उसको वहीं से कॉपी कर लें इलस्ट्रेटर के अंदर, और फिर वहां पे जाके आप टाइपोग्राफी के साथ प्ले कर सकते हैं। दैट्स हाउ आई डू। आई मिक्स एंड मैच सॉफ्टवेयर। आई डोंट एंटायरली डू माय वर्क ऑन फोटोशॉप। मैं सारा काम फोटोशॉप पे नहीं करती हूँ, सारा काम इलस्ट्रेटर पे नहीं करती हूँ। मैं फोटोशॉप की सपोर्ट लेती हूँ विद द इमेज थिंग एंड आई एंटायरली डिजाइन विद टाइपोग्राफी एंड शेप्स एंड एवरीथिंग इन इलस्ट्रेटर। तो इसमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट बात नहीं है कि हाँ आप ये स्टार्ट करें और इसमें आप इलस्ट्रेटर यूज करें। आप फोटोशॉप इलस्ट्रेटर अगर आपको आता है तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम I personally think you should start from logo design. If you don't want to start from logo design, then start from social media post. सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर भी अगर आपको छोटी सी जगह पे अपना कोई लोगो डालना ही पड़ता है, आप लोगों के बगैर कभी भी पोस्ट आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती, वरना लोग कैसे समझेंगे किसने बनाया है, ठीक है? तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग स्टार्ट फ्रॉम द लोगो एंड देन जंप ऑन द पोस्ट डिजाइन विच इज सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आप फ्लायर डिजाइन करें, फ्लायर डिजाइन के बाद आप ब्रोशोर डिजाइन करें, ब्रोशोर डिजाइन के बाद आप पोस्टर डिजाइन के पोस्टर मतलब A3 पोस्टर डिजाइन करें, और आई गेस फिर उसके बाद आपको खुद ही समझ आता जाएगा। लेकिन स्टार्ट फ्रॉम लोगो और सोशल मीडिया, की दो बहुत बेसिक और बहुत आसान है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप स्टार्ट कैसे करें। Somebody is asking, how do you charge for your designs? What process do you follow? I think this is for me. I charge minimum $200 for a logo, and if a client is not in a condition of paying me $200, then I just refer that client to any of my alumni or my student or my team member directly. Because I don't want him to lose his. I don't want to lose any of the client, but I also don't want him to go away with the fact that I'm really expensive. मैं बहुत expensive हूँ, वो चला जाए, तो मैं उसको अपने ही सर्कल में रेफर कर देती हूँ। इसीलिए मैं जब आपके पोर्टफोलियो देख रही हूँ तो आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आपकी कुछ पोर्टफोलियो को मैंने आगे फॉरवर्ड भी कर दिया, जो लोग मुझसे काम करवाना चाहते हैं और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनके लिए काम करूँ, तो आई जस्ट फॉरवर्ड योर पोर्टफोलियोज। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि अगर आप मैंगो के ब्रांड में जाएंगे, इफ यू आर गोइंग टू गुची ब्रांड, देन यू नीड टू नो दैट देयर विल बी एक्सपेंसिव, द ब्रांड इज एक्सपेंसिव। तो अगर आप गुची का बैग खरीद रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने इतना पे नहीं करना, तो दैट्स लाइक दैट्स नॉट समथिंग गुड। So if you're coming to me, you should know that I charge a lot, and the kind of trainings I give, it's free, but the services I give, it's really expensive, since I know the process work, I know मैं किस तरह का design करती हूँ, I know what the hard work behind it. So and I deliver a quality work. I don't deliver a cheap work. तो ये चीज है, ठीक है? I hope I cleared the answer of Mr. Hasib. फाइवर पे ये वैसे अच्छा, मैं फाइवर की एक और चीज क्लियर कर दूं, मेरे पास फाइवर पे इतना टाइम नहीं होता कि मैं करूं, लेकिन फाइवर पे जो प्रोजेक्ट्स अगर आ जाता है तो वो भी फिर माय ब्रदर डू दैट। आई जस्ट सुपरवाइज हिम एंड ही मैनेजेस माय अकाउंट। हाय उमेर हियर, हाय उमेर। हाउ कैन, अच्छा ये हो क्या है? From where we can take web layout inspiration, that I will create a video, but you can take inspiration from Inveto Elements। वहाँ पे फ्री तो नहीं होती, लेकिन आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं एज अ इमेज। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। Mama, you want to add something on this question? From where we can take web layout inspiration? Yeah, I mean, it's just what I said earlier in terms of just whenever you start any project, just look at examples. Sorry, one sec. ये वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे ग्राफिक टेम्पलेट्स की वेबसाइट पे जाएं। देखिए आपको यहाँ पे ना ये इसकी इंस्पिरेशन मिल जाएगी, इंस्पिरेशन मिलेगी, और आप यहाँ पे इसको
एज अ JPEG डाउनलोड कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आप खरीद नहीं सकते, अगर आप खरीदना चाहते हो खरीद लें, खरीदे नहीं क्योंकि आप जब खुद कर सकते हैं। लेकिन इंस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द वेरी बेस्ट वेबसाइट, दिस इज एक्चुअली द website which I use for inspiration. But there's another Instagram page which I use for my website layout designing as an inspiration, and that is let me just search. We love web design. We love web design. So we love web design is a page on Instagram, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना लोगों ने डिजाइन की हुई होती हैं, और जिसने डिजाइन की होती है उसका क्रेडिट भी मेंशन होता है, तो आप उसकी प्रोफाइल भी स्टडी कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेबसाइट वेयर आई टेक इंस्पिरेशन फॉर माय वेबसाइट डिजाइनिंग थिंग्स, तो टेम्पलेट्स और व्हाटएवर। तो आपको ना एक आइडिया हो जाता है कि आप पिक्चर की फॉर्मेशन कैसे रखेंगे, हेडर कैसे रखेंगे, फॉन्ट कैसे रखेंगे, यू नो। ये एक वेबसाइट है, ये इसको आप देख सकते हैं। काशान, ये यूएक्स यूआई के लिए भी यही वेबसाइट बहुत अच्छी है, मैं इसके लिए ही यूज करती हूँ, तो आप इसको ही चूज करें तो इट्स अ रियली गुड वेबसाइट। Thank you, Essen. I hope I'm clear on my answers. So let's start another portfolio design. Guru Graphics. Wow, what a name. Guru. Do you know what is Guru, Mamu? Guru means master. And you know who is Guru? Who is Guru of these people? The people who are watching us. Guru Graphics, we are the gurus. Yes, we are the gurus, but We're supposed to be anyway. They call Guru to the person who invited me in his interview, Hisham Server. I see. So he has a website called guru.com, and he people know him for the word guru. So I think this guy is inspired from that particular thing. So Guru Graphics has a lot of words. Let's just go to his banner. उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, has made his own website. I don't like this. ये G. It's really scripted. He has made his website, but the work he has done is it's Okay. This is I don't. Okay, this is something that maybe you can talk about. You know, sometimes it's good to have a bunch of work in a portfolio, but if it's not presented well, then no one's going to look at it. In this case, you know, with the I know it's a watermark, but the lines are a bit much. You don't have to go that over the top if you want to protect your work. You can just have a simple, transparent guru everywhere. So yeah, I mean, I think आपने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, लेकिन पहली बात ये जो मामू ने बोली कि ये जो इतनी आपने अपनी स्ट्रिप्स डाली हुई है ना काम की, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, ये काम आपका कोई चोरी नहीं करेगा, बिकॉज़ इस काम के पीछे कोई आइडिया नहीं है। ये एक जस्ट अ लिटरल डिज़ाइन, इट्स अ लिटरल डिज़ाइन। देयर इज़ नो आइडिया बिहाइंड एनी ऑफ दीज़ डिज़ाइन। इसके पीछे कोई आइडिया नहीं है, इसके पीछे कोई आइडिया नहीं है, इसके पीछे कोई आइडिया नहीं है। there's too much. There's too Yeah, too many many elements, things. too much text. There's Just no focal point. I don't know what's happening here. What's happening here? I don't understand that. I'm sorry to say, Guru, if I sound rude or blunt to you, but this is something which you need to work on. The font you have used, the house font you're using, and then you're using 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonts you are using in one uh, post, and then you are putting your watermark over it. Nobody will copy it, honestly. कोई इसको चोरी नहीं करेगा, कोई डिजाइन, yeah. कोई concept नहीं है ना, कोई idea नहीं है. There's no concept and idea behind this. How can someone just steal your work? Just don't put watermark. Have you seen me putting this kind of straps on my work? I don't do that. If someone copies my work, he copies my work. It means that I'm a trendsetter. I'm keeping a trend and people are copying my work. It should be proud of it. No one is
copying your work. Please stop doing that. अपने काम पे ना ये watermark वाली strips जो नहीं हटा दें. एक छोटा सा नाम लिख गया करें नीचे, लेकिन ये strips में डाला करें, इससे पूरी काम की वो खराब हो जाती है. This is really really bad, really bad. Like I don't know what to say on this. There's HD, HD Beauty Parlor Institute. I know अगर ये आपके real clients हैं, उनको उस तरह का काम पसंद होगा. Client, Mamur, it depends on the client. The work we have seen so far, these are all the local clients in Rawalpindi, Islamabad, Pakistan. So Okay. over here, like they don't have any sense. So I believe कि client की requirement होगी तो इन्होंने इस तरह किया होगा. लेकिन जब आपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होता है ना, तो आप उसको अच्छे काम से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं. तो या तो फिर आप पोर्टफोलियो में अपना पर्सनल वर्क डालें जो आप समझते हैं कि बेहतर है. एंड आपके लोगों से मैं आप इसी चीज को लोगो बना लें. यू यूज दिस फॉन्ट इन योर लोगो. डोंट यूज दिस फॉन्ट इन योर लोगो प्लीज. This is better than this word. But I appreciate that you have built your own website. Website looks better. I mean, website looks a lot more better than your work. It means you have a good sense of design, but the kind of work you have shown, it's not at all uh, up to the mark. Yeah. It's not up to the mark to the market, at least. Just No, one no. thing I'd like to add. Yeah. Yeah, just look at your website. The reason why Dua said, can you just quickly go back, sorry, Where? to the menu, the beginning. Yeah, the reason why Dua said this looks a lot better than some of the examples we've seen is straight away there's a clear contrast. There's two main colors. It's easy to. There's a lot of good use of negative space. It's simple. It's clean. You know, the eyes are not lost. The tabs are clear. If you just scroll down. Wait. Yeah, again, good use of color here. The fonts are consistent. You know, it's not all over the place. You've got the menu on one side. It's not perfect, but you can tell, you know, you've got some design sense. You know how to lay out artwork. It's just the example. Sometimes don't always listen to what the client wants. Oh, do I hear she's gone? Yeah, I'm here. I'm here. Okay, I thought you disappeared. I thought, is this a solo show now? Yeah. So maybe some of the designs we've seen, it was the client requesting it, but you've got to push back sometimes. Don't be afraid to stand your ground and just Yeah. show them that you're the professional. They Yes, need to be exactly. listening to your advice. Someone said here, Nihal Rahman, that I think Guru's locally based means you see the banners, these in Pakistan and India. That's what I'm saying. It is our responsibility to change the mindset of the people living here that these designs are not at all good, right? So we need to present them more good ideas. They will accept it because then we'll educate them. When they don't have any education, जब उन्हें पता ही नहीं कि इस तरह का डिजाइन भी होता है, उनको मार्केटिंग ही नहीं पता, वेस्ट का कल्चर नहीं पता कि वेस्ट में किस तरह से एडवर्टाइजमेंट होती है, कितना ट्रिकी गोरिल्ला मार्केटिंग होती है, तो हम उनको जब बताएंगे ही नहीं तो वो हमारी बात को कैसे उनको समझ आएगी कि हम लोग इस तरह का काम कर सकते हैं. वो तो जो चीज उन्होंने देखी हुई है वो वही चीज को कहेंगे हाँ हम इस तरह का बना दो, इस तरह का बना दो. राजा बाजार में भी इस तरह का होता है, उर्दू बाजार में भी इस तरह का होता है. तो we don't have to do Raja Bazaar type design. We have to show them that these designs are not at all good, and we need to come up with a good sense of design and show them okay, show them their design, show them your design, give them two options and then educate them. अगर आप उन्हें पहले से कहेंगे ना नहीं आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल फिजूल है, you are just talking bullshit and my work is fine, then the client will say whatever I'm saying I'm the king, whatever I'm saying is do that, then the client will get upset. But if you do clients work and then you do your own work and then you show the comparison and then you educate them about the options, then they will listen to you properly because you have done your part, and now it's their ball is in their court, and they will get to know that oh now I think this is much better because our whole team is liking this more. You have to create the if I give you the example of 100 days logo,
100 Years logo was presented in the government sector, right? The government sector has conventional logos, you know that, the green one and the white one. But I created the modern logo of for the government, and government accepted that. Government got convinced with that logo. Government was like that. Okay, we are taking this logo forward, and we are having a full function on convention center while using that logo and its branding. Just because I showed they were conventional logos, but they were unconventional logos. Unconventional means जो modernism की तरफ होते हैं. And they were like, yeah, we need some change. We need something like that. We don't need that Iqbal ka Shaheen her time Iqbal ka Shaheen, and there's nothing creative about it because it's being used so many times. It's generic. So you need to. It's your responsibility as a designer to change the concept of that client concept and educate the client that these designs are not at all good. Guru's website is good, and I can tell from his website that he has a good sense of design. But the work he has done for the clients, he needs to educate the client that, honey, this is not working at all. Please just review it and let me do it. I'm the designer. At least take the responsibility. Take that that weight on you. When you will take that weight, आप वो वजन उठाएंगे तो आपको समझ उस बंदे को जो है वो पता चलेगा अच्छा नहीं, let's just give a chance. Let's just give a chance. Uh, yes, M9 music आपने बनाया था, very good. I really like it. I even showed that. Uzair is saying too much yellow on the website. Elements of yellow website need to be worked on. Uzair, yes, we know, but we are comparing this to his work for clients. Yeah. That said, it's at least it's better. We didn't say it's good. Thank you, Zair, for your comment. So Kashan is saying, so basically these kind of client demand is to add more and more pictures into banners and bigger fonts and more color, many more colors. So yeah, that's it's your duty. Why I have work for the clients which is clean, and they are locally based. They're not international clients, because I give them their option and I give them my option, and they 90% of the time they choose my option because I give them rational concept and everything into a designed form. We'll take the last portfolio for today because Mamour also has to go somewhere and I have to go somewhere else. I have a meeting, and so far what we have discussed, if we haven't reviewed any portfolio, obviously we'll review them on later episodes. But if we haven't reviewed any portfolio, you guys have known that what kind of design sense, what kind of layouts, what kind of a logo, what kind of fonts, what kind of colors we have to use, and we have to make our design better. Monkey Gaming, I will be reviewing your portfolio as well, but that's why the concept of episode 1, episode 2, episode 3. तो episodes चल रही हैं, right? अगर मैं एक ही गो में सबके कर दूंगी तो फिर हमारी episodes खत्म हो जाएंगी, हमारे पास content नहीं रहेगा. Mamour, let me just share my screen, and you will be reviewing this particular girl's work. Sadia Niazi. Sadia Niazi. Is this just one image here? I Or guess. is there more? Is there a series? Yeah, it's the one. She's just shown the mock-up. Okay, let me just take out any non-mock-up stuff. Let's just talk about illustration. Yeah, let's do illustration. I think this is your forte. I think you know more about this. I'll add you. You'll start. Okay, so Sadia is my alumni. She's my student, and this is the assignment I gave her for the first time. और पेन टूल की असाइनमेंट थी, और मैंने इनसे कहा था पैरेट बनाना है क्योंकि पैरेट के अंदर बहुत कलर्स होते हैं. तो इनका जो पहला पैरेट था और ये वाला जो पैरेट है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है. तो सादिया, दिस इज अ वेरी गुड illustration, very good use of colors, very good use of colors, but not using gradients. That was the tricky part of this particular pen tool assignment that and background is actually really disturbing. Why you have used so colorful background? Just use white. But she used orange and yellow, but she didn't use gradients. So
still the color are blending with each other. So this is a very good illustration. But please, please, please replace this image. अपनी image के पीछे white background डालें, इस parrot के पे जुल्म ना करें. इस parrot को पहले आपने इतना colorful बनाया हुआ है, and the background is also colorful, then it's just not Parrot going is a good. bit lost, right? Yeah, it's lost in the Barbie theme. Yeah, but the lines were clean. I did like it. Lines were clean, yes. Why you guys don't upload the real work and then the mock-ups? I don't understand that. Okay, let's talk about this. My favorite project. This is a project which I gave to my student. मैंने इनको एक बुक टाइटल दिया था, कहा था बुक कवर बनाना है, और बस मैंने इनको बुक टाइटल दिया था और कलर्स बता दिए थे, ये कलर्स होंगे और ये बुक टाइटल होगा, ये ऑथर का नाम है. बाकी इन लोगों ने सब कुछ खुद किया है, एंड आई एम इन लव विद दिस बुक कवर. लाइक आई रियली वांट टू बाय दिस बुक जस्ट बिकॉज ऑफ द cover and everything, but the font choice is bit weak. इस वाले में, not the right one because this is a shade, but the font choice is bit weak. The Boy Who Loved Trees, it should be more powerful and more impactful and a little bold. It should be perfect. This design should be perfect if you have done it. You have But in your general, it's good because the image sets the tone. It links in with the title of the book, and it makes you curious. And once you want to pick the book up and you want to read, and that's this is what good design does. It catches your attention. It makes you pick something up you otherwise would just overlook. If this was poorly designed, people wouldn't want to read this. So yeah. this is a good example of how a design can sell a product essentially. Yeah, the look and feel. Like if you look at it, you like it, and then you find the mistake that is doable. Like we can fix Mm. it. But if you look at it, you don't like it. You're like, it's too much happening. Then the design is bad, and you need to redesign everything. There's a question from SN Khan that is there any set timeline in which you can like master the rules of design? I mean, like I really have a problem. I never feel confident enough for freelancing for it. So he's not confident enough to show his work or to work professionally because he thinks that his design is not that great or he don't follow the rules. So I want you to answer this, Mamu. In all honesty, you need to have confidence, and everyone starts somewhere. If you don't take that first step, then you're never gonna get to a point where you do have a good grasp of design and you are confident enough to get work. So you need to take that first step. I know it's hard because you see other great designers and you see, oh, I can never do something like that, but you can. It just takes patience, and you've got to believe in yourself, and you just got to be consistent in what you do. Even if you aren't confident now, still do what you can. But yeah, just do what you can and take that step. Yeah. So it's Okay. taking that step basically, yeah, to get the designs, and don't just be like, oh, I can't do this. I don't want to do this. Even if your designs are not good, if you think they're not good, at least you're designing for clients and you're still getting clients. So just keep doing what you do, and eventually, as you learn more about design and as you get better with using tools like Illustrator, Photoshop, your design will get better. So just keep doing what you're doing, and don't put such constraints on yourself. I have shared it. I shared my screen, guys. Please look at my screen. I have shared it. और जाते हुए मैं आपको ये दिखा दूं कि आप लोग की मुझे ईमेल रिसीव हो गई हैं, लेकिन ये देखें बहुत सारी ईमेल्स हैं ये पोर्टफोलियो के लिए, इतनी सारी हैं, ठीक है? तो मैं सारी एक साथ रिव्यू करने में मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर मेरी जो एक अटेंशन टू डिटेल एवरी पोस्ट है ना, वो खत्म हो जाएगी. इट्स नॉट अबाउट योर डिजाइन इज बीइंग रिव्यूड और नॉट, इट्स अबाउट द डिजाइन इज बीइंग रिव्यूड, एंड यू नो दैट द डिजाइन्स आर द पोर्टफोलियो आर बीइंग रिव्यूड. उसमें जो मिस्टेक्स हैं वो आपके डिजाइन्स में हो सकती हैं. तो जिन जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ, तो वो जिन लोगों का हो चुका है उसमें से तो एटलीस्ट मिस्टेक्स निकाल के ठीक कर सकते हैं ना. और
आप लोगों ने मुझे पोर्टफोलियो सेंड कर दिया, लेकिन मैं अब एक सजेशन लिया मैंने एक अपने ऑडियंस में से एक बंदे की कि मैं कैटेगरी रख लेती हूँ, ठीक है? तो कैटेगरी मैं करूँगी कि आप लोगो सबमिट करवाएँ, पोस्टर सबमिट करवाएँ। तो इस तरह ये होता है कि फिर उस क्राइटेरिया की बेस पे मैं आपको रिव्यू कर सकती हूँ। अभी वो जनरल हो रहा होता है तो वो फिर समझ नहीं आ रहा होता, थोड़ा मिक्स हो रहा होता है। तो नेक्स्ट होगा उसमें आपको बता दूँगी, अपने आप लोगो सबमिट करवाएँ या आप अपनी जो भी असाइनमेंट्स होती हैं वो सबमिट करवाएँ या फिर आप अपना पोस्टर सबमिट करवाएँ। अगर लोगोस का है रिव्यू तो लोगो का ही होगा, वो पूरा जेनेरिक नहीं होगा। ये मैं अब अगले एपिसोड से करूँगी। लेकिन हर किसी का मैं ज़रूर पोर्टफोलियो रिव्यू करूँगी अगर वो कैटेगरी में फॉल कर रहा हो। लेकिन दिस इज़ लाइक too many portfolios. Now, I have to like go through with Paul Rand artwork as well to find the winner of this competition. तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे करनी पड़ रही होती हैं। तो एक सेशन एक 1 एंड अ हाफ आवर का काफ़ी है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, उसको प्लीज़ फ़ॉलो कर लें। उसको फ़ॉलो कर लेंगे तो आप मुझे रीसबमिट करवा दें पोर्टफोलियो। उसी ईमेल पे रिप्लाई करके कहें कि आपने जो बताई मैंने उसको चेंज करके अब ये किया है। हो सकता है मैं आपका बिफोर एंड आफ्टर का काम दिखा दूँ। ठीक है? So thank you so much for giving me your time, and thank you, Mamoor, giving your precious time. And I know it's Monday, but still you are on your toes for me. I hope you will be joining me in next sessions as well. Uh, do not disappear. आपने Hey, I can't disappear. I'm your husband. I'll be here for you anytime. Just give me a call whenever you need a guest. And yeah, it's fun looking through some of these designs and do yeah, you have just any go. parting words for the audience? Any parting words? Yeah, so obviously just follow Dua. I mean, she's got her own Instagram. Follow Designkhana. Again, she's doing this for free. She's not getting any money from this. She really wants to help up and coming designers in Pakistan and teach them about this industry and how to get into it and make a living from home. So it's just take advantage of it and these things, a lot of these things she's talking about, you don't even learn in university. And take it from me, I've been to university here in England, and a lot of the time it's very generic. They just tell you about making logos, but Dora talks more about how to make a living and how to make use of your time. She goes into more depth, so take advantage of this, support her, and yeah, it's for your benefit at the end of the days. So yeah. I'm sharing my channel's link if anyone of you haven't subscribed me yet. Subscribe, subscribe, subscribe. When we have 10K subscriber, wait, let me just go out from the camera and come in again. I have a thing for you guys. Yep. So if I got 10K subscriber, then I will be holding a competition, but very small competition. There will be a very little competition, छोटा सा होगा. और उस competition का जो winner होगा within within Islamabad, like within Pakistan, not like Bangladesh, India. I cannot send my stuff to them. Within Pakistan, जो भी होगा उस competition को win करेगा. तो मेरे पास ये वाली जो डॉटेड बुक है जो मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर इस्तेमाल की थी, जिसको फील्ड बुक भी कहते हैं, जिसमें डॉट्स होते हैं, ये जो है मैं गिफ्ट करूंगी साइन करके. ये वैसे मैंने अमेजोन से मंगवाई है, तो it has a worth in my life, and I never thought of giving it away. But with your love and everything, I will give this field book to people, to one of the person who will win the competition, जो मैं announce करूंगी near when my subscriber will go near to 10K. और वो जब 10K हो जाएंगे तो I will hold a live session. I will conduct a live session, and वो लाइव सेशन कंडक्ट करने के बाद मैं विनर अनाउंस करूंगी. मैं उस विनर को अपने सेशन में इनवाइट करूंगी और ये मैं उसको
टीसीएस करूँगी या लेपर्ड करूँगी, कोरियर करूँगी और इस पे मैं सिग्नेचर कर दूँगी और मुझे लगता है कि मेरा ऑटोग्राफ आपके लिए कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा ही, मतलब आप लोग चाहते ही होंगे कि मेरा कुछ ऑटो या साइन कोई किताब मैं आपको दूँ। तो आई विल गिव दिस टू यू और इन फ्यूचर आई विल बी गिविंग मोर एंड मोर गिवअवेज टू जस्ट मोटिवेट यू गाइस। और अगर आपने ये अर्न करनी है, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, लाइक बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ये अगर मेरे हाथ से जा रही है तो ये दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी योर लक एंड योर चार्मिंग। तो ये फील्ड बुक होती है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि डॉटेड बुक को क्या कहते हैं। दिस इज फील्ड बुक, इसके अंदर डॉट्स होते हैं और डॉट की मदद से आप ग्राफिक डिजाइन में आप मैनुअल जो है वो ड्राइंग या इलस्ट्रेशन या टाइपोग्राफी कर सकते हैं। Thank you so much, Mamoor, and thank you so much, all of you. See you soon. Inshallah, this session was conducted entirely for you guys. And please subscribe to my channel, subscribe to Instagram, subscribe, follow my page, and follow me. And watch Paul Rand's video and do the task before the deadline. Deadline is 11:55 p.m. today, Sunday. I will be looking forward for your work and the winner as well. Bye bye.